Ram Ram, Jai Hind, Jai Bharat. It's a beautiful morning. Align and Thrive show with Geetika and Sunny. Today's special guest is Swati. Swati is a beautiful combination of head and heart, daring and caring, knowledge and wisdom. Yes, with her titles, she's a learning strategist, a visual facilitation practitioner, performance coach, and so much more beyond titles. She's a spiritual seeker. She attracts abundance effortlessly. She's a mother of a high spirited 9-year-old, and she continues to smile when she spreads sunshine in so many lives that she touches every day with ease and peace. Welcome, Swati. Thank you so much, Sunny. Thank you for having me here. Welcome, Tathastu. बताओ अपनी secret of smile. What is the secret of your smile? The secret of my smile um, is my very, very strong belief that everything always works out for the best. ये कहाँ से आता है ये belief? सत्संग जाते हो आप? नहीं, I think life में जो भी experiences हुए हैं and also the kind of nurturing that I have got from my parents, um, life has been full of ups and downs, but at the same time, I've had some very, very positive support with me, which मम्मी has से क्या सीखा always. आपने? मम्मी से क्या सीखा कि खाना चाहे पहली बार बनते हुए कितना भी अजीब बनाओ, लेकिन मसालों के मिश्रण से ठीक हो जाता है. सो दैट इज हाउ लाइफ इज, फॉर मी. पापा से क्या सीखा? पापा से क्या सीखा? पापा से ये सीखा कि अम, उनसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी मैंने कि लाइफ में नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है. सबसे बड़ा लेसन मुझे उनसे ये मिला दैट द मोस्ट मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन लाइफ इज चेंज. जिससे हम अक्सर कतराते हैं और हमें लगता है अरे जीवन में कुछ बहुत बड़ी बात बदल रही है, कैसे संभालेंगे. थैंकफुली इसमें मैं हमेशा उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी दैट उन्होंने चेंज को हमेशा बहुत पॉजिटिवली ट्रीट किया, और इसलिए चेंज से कभी डर नहीं लगा मुझे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो. सो किस दैट्स चीज व्हाट से आई हैव डर लर्न लगा? फ्रॉम. किस चीज से डर लगा? um, सच बोलूं तो किसी से भी नहीं. क्योंकि आपने लिखा है अ, आप फियरलेस हो. जी, शायद सीख में ही, क्योंकि ये मिला बड़े होते हुए यही देखा कि कोई बदलाव कभी भी बुरे के लिए नहीं होता. उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आपको उससे एक सीख मिलती है जो आपको आगे लाइफ में गाइड करती है. तो इसलिए मेरे लिए कभी चेंज नेगेटिव था ही नहीं. बेटी से क्या सीखा? बेटी से क्या सीखा? अम, कि लाइफ चाहे कितनी भी टफ चल रही हो, मस्ती फिर भी हो सकती है. मैं यही सुनना चाहता था. ठीक है, जी अगर बिल्कुल. स्वाति को आपको थर्ड पर्सन जैसे देखना है तो स्वाति से क्या सीखा? माँ स्वाति. अम, स्वाति से मैंने ये सीखा कि स्वाति से मैंने ये सीखा कि बस आगे बढ़ते जाना. अम, कोई भी चीज परमानेंटली कभी खत्म नहीं होती. कोई एनर्जी कभी परमानेंटली डिमिनिश नहीं होती. वो सिर्फ कन्वर्ट होती है, और उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हमारे हाथों में. एक किताब और जो आपकी फेवरेट है, और मैं शॉर्ट आंसर्स पसंद करता हूँ, इसलिए जी मेरा अगला सवाल रेडी रहता है. एंड जी. वो लॉन्ग आंसर्स, PhD 21 आंसर्स, इसलिए मैं आज ज्यादा ही स्पीड में हूँ. तो नो वरीज. be positive, and you also have a meeting to go, so a lot of questions. Is that okay? श्योर श्योर एब्सोल्युटली. गुड गुड. अब मैं भूल गया अपना सवाल क्या था. आपने शायद किताब पूछी थी.
हाँ ओके, वन किताब यू लव एंड वन लाइन में बताओ वो किताब से क्या सीखा। वन लाइन में बताऊं कि उस किताब से क्या सीखा? सो किताब का नाम भी बता दो। it has been a while that I have read a book, but okay, this is at a very personal level. My father was a poet, was a Hindi poet, and he had got a book published of his own, a book of poetry, हाँ, घूम आया कई मोड़। और उसमें उनकी लाइफ के जो अलग अलग माइलस्टोन्स रहे हैं उसे उन्होंने मेटाफोरिकली पोएम्स में प्रेजेंट किया। और वो किताब मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगती है, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनके जीवन को भी जानती हूँ। बढ़िया। एंड दैट इज माय फेवरेट बुक। थैंक यू सो मच, इट्स लाइक भगवान ने आपको हमारी खुशी के लिए भेजा है आज। हर आंसर में आप चौके चक्के मार रहे हो। ग्रेट। वन थिंग यू लव द मोस्ट अबाउट स्वाति। वाह स्वाति, इतनी One thing प्यारी that है I तू। love the most about Swati, um, I think two things. One, I think she knows how to have fun, no matter how tough life is. Two, very, very strong believer that everything just works out. So strong resilience, a very resilient person. बिल्कुल सही बात, इसीलिए मैंने बोलता हेड एंड हार्ट, लव एंड लॉजिक, मस्ती एंड परफेक्शन ऑल्सो। ये परफेक्शन के कारण कहाँ कहाँ आप एकदम फंस गए थे और आपने बोला छोड़ यार मिट्टी पाओ। जी। um, शुरुआत लाइफ की मेरी परफेक्शनिज्म से ही इम्पैक्टेड रही है बहुत समय तक। और सेल्फ रियलाइजेशन भी शायद इसीलिए आया दैट परफेक्शनिज्म इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। बहुत साल गुजारे जहाँ पे हर चीज परफेक्ट होनी बहुत जरूरी थी, और इसलिए बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा स्ट्रेस भी होता था उसकी वजह से। बट धीरे धीरे आई थिंक स्पेशली आफ्टर हैविंग माई डॉटर, अब वो 9 साल की हो रही है, पर जब वो हुई तो कुछ समय तक लगा सब आउट ऑफ कंट्रोल है, और फिर रियलाइज करा कि अरे सब आउट ऑफ कंट्रोल है तब भी हो गया। तो हर चीज के परफेक्ट कंट्रोल होने की था ही जरूरत क्या और कंट्रोल करना ही क्यों है, करेक्ट। ये नहीं। बच्चे हमें ये बिल्कुल सिखाने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। वो सारे लोग जो फिक्स माइंडसेट में भी हैं, रूल बुक बनाई हुई है, ऐसे ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, कंट्रोल करो, ये बुकिंग हो जाए वो बुकिंग हो जाए, ऐसी बुकिंग हो जाए या कंट्रोल हो जाए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे 2 लाइन में। आई थिंक सबसे पहला सवाल अपने से ये पूछना चाहिए कि आप किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। आ, और दूसरी बात ये कि क्या आप अपने अलावा, अपने स्केड्यूल, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंडसेट के अलावा, सच्ची सच्ची पूछिए अपने आप से, क्या आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? ना आप दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, एक्चुअली नथिंग इज इन योर कंट्रोल। The only thing which is in your control is your mindset. When you step out of the house or when you get up in the morning, um, what have you told yourself? अगर आपने ये इरादा कर लिया कि आज मेरा दिन अच्छा ही गुजरेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो गुजरेगा ही गुजरेगा, कोई चीज आपके सामने आ नहीं पाएगी। So I think the only thing in control is your own mindset. लेट हिम प्ले हिज म्यूजिक, जस्ट बी हिज फ्लूट। ठीक है जी। Absolutely. अब पूछेंगे गीतिका जी इंटेलिजेंट सवाल, डीप क्वेश्चंस। यस, वेलकम स्वाति जी। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ टैरो कोच एंड इमोशनल हीलर, एंड अवर लॉट ऑफ ऑडियंसेस you know, young people, and you seem to be very resilient and fearless soul. So I want that you share any 3 lessons that you have learned from your life, from your experience, and what would you advise to the young students, you know, or let's say if you have to advise your younger self, what would be those 3 things? Thank you, Geetika. What a profound question. Um, but some part of it I've actually, while talking to Sunny, it has already come out in the conversation. One Okay. big lesson for me is that change is always positive. Hmm. And it's not a matter of
a concept being written in the books. It's the truth. Uh, no change ever brings negativity. Uh, if not anything else, the one thing that you get out of change is a great direction for what you can do with your future. And I think the youngsters in our generation uh, really need to appreciate the opportunities that are coming through and also realize that change may shake you because it's something different, of course, from what you're doing every day, but it would never throw you off your ground. You'll always find your ground. So that's the first thing that I feel um, I would like to pass on to today's generation. Um, the other aspect is rather than focusing on the why, focus more on the how. Things happen. और कई बार हम अपने आप को इसी जंजाल में फंसा लेते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसके साथ तो नहीं हुआ, हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, या हम हमें लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब क्या होगा. But rather than focusing on that, if we could just focus on, okay, how am I going to get out of this? अगर what पूछना ही है तो ये पूछे कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा, what will be my next step to ensure that I get out of this. I think rather than focusing on the why, focus on the how. That's the second thing. The third aspect, and this I think I'm realizing as I see my daughter grow. She is the youngest generation that I'm experiencing today. And I learn this from her every day. Is the fact that your joy is in your hands. Nobody's going to bring it to you. Circumstances will impact, may impact, but how much they impact is in your hands. So this is one spirit in my daughter that I get amazed by every time, that she just knows how to have fun and at the same time get her work done. So yes, commitment is required. Hard work is required. There'll never be any shortcut to that. But you can always do that joyously rather than giving yourself stress. So that's the third aspect that's coming to me. Yes, yes, very beautiful insights, all the three. And the second thing that came into my mind while you were talking is that, you have shared that your father has been poet and he has written very wonderful book. So if any excerpt or few lines, if you can share with us as an inspiration. I would And have loved to do that, but I would need the book for that. I don't remember. so So, any lesson that you want to share with us, what you have experienced after reading that book. um, the one thing that resonates a lot in my father's poetry is learning from his experiences and memories. Um, he would keep moving ahead in life, but he would remember what has happened in the past and always learn from it. His poetry, his verses reflect that. Every memory is so beautifully put into, how it resonates with the present. And I think that's my biggest learning. And that's what I appreciate the most, that you can't deny the present. That is where you are, that is where you'll always be. But Yes, the paths that you have gone through can teach you a lot, and we should learn from it. absolutely. We can learn from our past to make our present and future beautiful. Thank you so much, Swati, for wonderful insights. Over to you, sir. Let's play one Thank word you, Geetika. answers. Oh, Parenting in sure. one word. Parenting in one Parenting word. in one word, totally unpredictable. Life in one word. Beautiful. Mummy in one word. Sorry, I didn't get that. Mummy in one word. Mummy in one word, the world. Papa in one word.
Papa in one word. Knowledge. Your daughter in one word. Joy. Love in one word. Passionate. Success in one word. Fickle. Coaching in one word. Forever. Swati Menon in one word. Enthusiastic. Thank you for your divine enthusiasm. And that is the most important ingredient of success, as told by Swami Chinmanaji. And I invoke Almighty's grace and blessings on you, on your family. And we wish you all the best in all your noble future selfless endeavors with a beautiful smile of yours. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sunny. Thank you so much, Geetika, for having me here. It's been a pleasure and a wonderful start to my day.